Welcome, ladies and gentlemen. We welcome you all to the last leg of the Chemical Week being hosted by Alfalah CLSA. Today, we have with us Descon Oxychem, the market leader of hydrogen peroxide in Pakistan. The company is being represented by the Chief Financial Officer, Mr. Rizwan Qaiser. I, Sajjad Hussain, the Head of Research at Alfalah CLSA, will be your host. The session will follow a similar format of a brief presentation by the company and followed by the Q&A session. Mr. Rizwan, please begin. Assalamu alaikum, everyone. I would like to thank you, Alfalah, for organizing such a great session with the investors. Especially, it's important considering the volatility in the market and the changing situation. So it's important to keep connected with the market. Thank you for the opportunity that you have created for us. Let me take you through the presentation and then we can move on to the question answers after the presentation. I will be a little quick so that we can keep a little bit more time for the question answer session at the end. Let me start. So this would be the format of the presentation. So we will start with a brief introduction, then a corporate overview, business overview, production overview, growth drivers, and financial overview. So these will be the items that I will be covering throughout my presentation. Descon as a group, we are one of the biggest entities in the country. So we have around 19,000 employees, 29 nationalities, and we have businesses across 9 countries. Our annual revenue is somewhere around $500 million, and we have a history of 45 years. So we are quite experienced group in the market, and we have a solid backing. Moving on to our core values. If you look at our core values, the most important one is the continuous improvement and safety. Then comes leadership, accountability, teamwork, open communication. These are the foundations of our growth, and we want to continue taking these values with us throughout the business operations that we are running. Moving on to the basic understanding of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is a chemical that is primarily used in textile, but there are other applications also in paper, food, and multiple other sectors, including pharma. So there are multiple uses of, and I will discuss those uses as we go into the presentation. So we have a local as well as global footprint. We are exporting product to international markets. So we also have presence in the international market, and recently we have also registered an entity in UAE in order to handle our international business. Moving into the company's profile. So incorporated in 2004. So we are listed on stock exchange. We had a capacity of 28,000, but our current capacity is closer to 42,000 tons. And looking at our winning together with our customer, our ambition is to enhance local and regional footprint while delivering sustainable value to all stakeholders. So we are an import substitution company. We are trying to reduce the import, which is a significant burden for our country, and help the textile sector grow. Textile being our biggest customer. Looking at our goals are profitable, sustainable sales growth that we have been achieving during the last 10-15 years of operations. We are continuously working on manufacturing excellence, and then we are working on engaged employees. So these are our end goals, and then our foundation again is our core values that we keep very close to our heart. I will give a second to go through the profiles of our board of directors. There are 2 recent joiners, Jazib Khan, who was ex-CEO ExxonMobil, and Mohammed Zahir, who was CEO Mitchell's Fruit and Farm Limited. So we have a well-diversified and experienced board with experience in the chemical industry as well as others. So we have a very solid board in order to guide the company towards the right direction. Looking at the management team is very, very energetic, and there was a change in the management, especially the CEO and the CFO 2 years ago. Since then, the company has grown significantly. So we believe with the kind of experience that has come on the table, we are aligned to grow further and turn this business into a multi-billion-dollar business. Moving on. So these are some of our key partners. We are working with some of the biggest banks in Pakistan. Then our external auditor, PwC, the best in the industry. Our internal audit is outsourced to KPMG. We are rated by PECRA, and then our share registrar is Copling. So just taking you through the journey that this company has seen. It was incorporated in 2004, got listed on stock exchange in 2009, and started commercial operation. 2011, we saw our first profit of 180 million rupees, and we have been continuously. So this plant debottlenecking is something that we have been continuously doing. So then in 2017, we have seen production of 34,000, and our current production is 42,000 tons. A very reliable plant with consistent ability to produce 42,000 tons. In 2018, the board again approved a 25% expansion, and that expansion eventually paid off into the profitability that we have seen during the last 2 years. If we look at the last 2022, we see a net profit of 471 million full year, despite significant chunk of super tax imposed. We started working on our exports, so there was 229% increase in exports. The cash flow generated from operation was 1.2 billion as compared to 678 million, and our entity rating was upgraded to A+ and short-term A1. So looking at 6 months and 9 months, this has been a record-breaking 6 months and 9 months. The business has achieved a lot.
The net profit of the company has increased to 1 billion, an increase of 287 million as compared to prior period. So this is for 6 months. Interim cash dividend we announced. You already know that. Export sales has increased by 453% as compared to same period. So this clearly shows a direction that the company, and then we have also contributed to the external exchequer of amounting to PKR 431 million. So you clearly see a direction that the company has taken, and the change since the amendment change 2 years ago, the business has transformed and is able to deliver a significantly higher profitability as well as consistent profitability, which was one of the pain points that came as a feedback to us from the market. Moving to 9 months results. So in 9 months, we have a net profit of 1.3 billion, an increase of 354% as compared to prior period, net profit of 286. Export sales volume was 2,897 versus 467 metric tons, which was 520% increase. So there is a significant increase that happened in the exports. One of the problem that we have been constantly looking in hydrogen peroxide has been the price depressions and price cyclicality that we have seen in the local market. In order to hedge against that, 2 years ago when we had the corporate briefing, we informed the market that we will be going for export-driven strategy in order to hedge against local price depressions. And that is what we are trying to execute in order to make sure that our revenues and profitability are not impacted by the local cyclicality. I can't say that we have 100% achieved what we wanted, but we are going in the right direction. And with numbers looking at 520% increase year on year, you will be impressed what the company has achieved and with the ability that now the company holds in order to export. EBITDA increased to 2.2 billion versus 690, an increase of 217 million. So it's a success story all across. You will see significant improvement in numbers in the coming years, and that is something that the business is continuously doing in order to improve operations, be the least cost producer, and consistently produce the quality product that we are delivering to the market. Moving to the shareholding. So our free float is around 30%. 70% is owned by Descon companies. The rest is owned by the stock market, the public, and that is the free float that we have. So that shows the confidence that the key stakeholders have in this business, and they want to continue with that. Looking at the business overview, there are a few things that I will informing the market. The first one will be we will try to reduce reliance on textile segment. This is something that we have done last year. We have invested in a food grade unit. We are the only manufacturer of food grade hydrogen peroxide in Pakistan. So we are the only supplier. The alternate is imports. We again are trying to substitute imports, and Alhamdulillah, we have achieved around 80 to 90% of the market relies on Descon OxyChem for supplies of food grade product. The second important thing that we have done is create a natural hedge against price depression in local through exports, and you clearly see the numbers that are clearly showing we have exported significant volume, and we plan to continue to do that because if we continue to export, we also have a sandbagging against a new entrant into the market. So that is something that goes to our advantage. Moving on to manufacturing, we will always try to be the lowest cost producer in market. This is something that we are constantly doing. We have significantly improved consumption factors as well as performance as compared to our competitor. And we will continue to do that. We are constantly working on new ways in order to improve the consumption factor and reduce our cost. We also have a very close eye on the fixed cost that the company is incurring. On to the human capital, we plan that we will continue to work on employee retention and improving our existing workforce in order to bring them at par with any international standard that any company would benchmark. So this is our vision, and this is something that we are trying to achieve. This is our future strategy. Looking at the presence, you will see our presence across the board. In the whole of the country, we have distributor and we also have direct connections with the customers. So we are continuously working. We also have sales force available throughout the country. So we are one of the chemical manufacturers who has presence in most of the cities where textile and other allied industries are available. So just giving you an overview of our value chain, you will see all the biggest suppliers that you can think of and all the biggest customers in the country that you can think of that we are supplying to. We are working with Reckitt internationally. So we are not only supplying them locally, but we are also supplying them internationally. So that's an international customer. Other than that, we are supplying to all the top tier customers, blue chip companies in Pakistan. So moving on to the risks, which is very, very important. And through these risk guidelines, we continuously are monitoring the situation that the market is going through. And we try to hedge these risks in order to make sure that we do not end up ending in a situation that we don't want to be in. So the first one is the price depression. I've discussed this at large. We are hedging through export, market development, through improved product placement and new product development. So these are three things that we are constantly doing in order to make sure that we do not get depression in prices.
So new product development means that we are going into new industries. We are having trials in the sugar industry. Hopefully they will be successful. If they are successful, we will be opening a new avenue in which we will be supplying to the sugar industry. We are already supplying to the mining industry. We are supplying to the textile. We are supplying to paper. So we are always on the lookout for new industries, new applications where the product can be used. So that is one. Then comes the export market development. So export market development is something that is very close to our heart. And you see the company's clear focus on it in order to make sure that the prices do not get depressed, because there is, if we look at the regression numbers that we have run, we realize that correlation between prices amongst different regions is low. That means that if you are exporting to some markets, there are high chances that if the prices are depressed in the local market, they will not be depressed in the international market. But again, this keeps on changing with the global situation, with the world being more interconnected. Market share realignment, I will proudly say that something that we have done over the last 2 years is that we have increased our presence in the northern market, especially Faisalabad, and that has helped us in order to deliver the product in a high profitability segment as compared to low profitability segment. And that has also helped us to capture market from our competitor. So our competitor has been unreliable during the past few years, and that has given us the opportunity in order to take on the market. And this is something that we are strengthening our position in the market. So the next risk is turnover in critical positions. So we are continuously working on succession planning and strong retention policies. In addition to retention, we are also training these employees in order to make sure that they are benchmark for the industry to follow. Plant reliability, consistent manufacturing excellence drive. So our plant has consistently produced and has given the consistent volumes that we always expected that the plant to produce. That is why 42,000 ton is something that is a reliable number for our company, for the market, so that we can inform them that we can manufacture it at all costs, unlike our competitor. So one of the challenges that the world right now is looking at is supply chain disruptions. What we have done over the last 1 year, so there is a significant reduction in the supply chain disruption that the world has seen, but we still are deploying additional working capital. And we are trying to be export focused, because if you are export focused, it's easier for you to open LCs and import. So that is something that goes to our advantage, that the long-term strategy that the company wishes to follow also helps in the short term in terms of dollar. But we also have deployed additional working capital into the business. Yet we do not borrow a single penny from the banks except the turf loan that you see on our balance sheet. We have not borrowed, so we have managed it all through the cash conversion cycle that the company manages. So that's a big achievement for the company, especially during the high interest rate time period. So interest rate hike, this is some risk. What we have done is over the last 1.5 year, we have prepaid all our loans except the turf, and we don't foresee that we have significant risk associated with. That is why we have crossed the risk. Moving on to the next one, increased packing cost. So in our industry, we sell in cans. There are multiple packing, but primarily the most used packing is 30 kg drums. And we have an in-house facility where we manufacture drums that makes packing cost a significant chunk of our total manufacturing cost. So what we have done is that we are pushing for conversion to bulk. So during the last 2 years, we have converted around 10 to 20% of additional volume in bulk. And that helps us reduce our reliance on the packing cost. That is also our sustainability target. We plan to do that. Moving on to freight cost. Something that this company has been able to achieve that many others haven't been able to is that we have moved to ex-factory suppliers. So this dissociates our profitability from the increasing freight cost. So therefore, it is important for us that we move to ex-factory, and that has helped us improve our margins also. New entrant is a risk that we see. Engro was planning to come in this year, but we don't expect that Engro will be coming at least for 1.5 years. So we expect that once they will be here, we need to make sure that we keep on developing the local and export market. We believe that right now, considering the imports at being 24,000 ton, Engro coming with a 28,000, that will not be a significant risk. But being a prudent company that we are, we plan to develop international markets, making sure that in case there is a reduction in demand in the local market, we do not end up in a situation where excess stock is available in the market. So we don't foresee that there will be a situation in which excess stock will be available in the market. Moving to the production, just a look at the production process. I'm sure you all know it already. Moving on, our health and safety is one of the most important value that we hold.
We want to develop a culture across the board, and we believe that responsibility of HSE lies across the company rather than with few individuals who are working with the safety department. So safety is a responsibility of all the company. We have introduced sustainability target for the business, and we are continuously upgrading our HSE systems in order to make sure that we are at par. Sorry for the technical disruption. So United Nations sustainability goal is something that I was discussing. So if you look at the training man hours, we are at 5.8 hours per month versus targeted 4 per month. We are ISO certified, so 45,001 certified. So moving on to affordable and clean energy. So we are trying constantly reducing our natural gas and power index. That not only helps us in terms of profitability, but also helps the business overall. We are working on gender equality. So this is something that we have already. So 10% of our workforce is female. So that is something that is very important for us in order to bring diversity to the business. Responsible consumption and production. We are constantly. So the technology that we are using at our plant is Chemator. So Chemator is a Swedish company. So the technology that we are using is European. So our competitor is using Chinese and Turkish technology versus ours. So our consumption factor are significantly lower than our competitors. So we are 100% compliant with hazardous and non-hazardous waste with EPA and PEPA. We are working on reducing water consumption 10% at least by 2023. So these are some of the initiatives that we are working on and some that we have already achieved. Let's talk about the market of hydrogen peroxide. So Descon has a nameplate capacity of 42,000. This is something that we always produce. Sitara has a nameplate capacity of 30,000 tons. They are very unreliable, and that is why it is very difficult for them to hold market share and also to hold customers, because most of the customers do not want their production to be affected by unreliable supplier. So this is something that we all understand, and that is why most of the companies are moving towards reliable suppliers. So Descon has become a preferred name in the market as compared to Sitara. And then looking at the imports, the number comes to somewhere around 26,000 ton by the end of the year. So we expect once Engro comes in, there is a sufficient gap in the market, so closer to 28,000 ton plant that they are coming with. There is sufficient space in the market for a third player. Talking about the technology that I've already discussed. So plant technology, what we are using is Chemator. What our competitor is using is Chinese and Turkish. The targeted capacity utilization is 103 versus SPL 60%. So we don't even expect that SPL will be able to achieve 60%. We are the only manufacturer with the capability to produce food grade product in Pakistan. So that gives us competitive advantage, and that also gives us the ability to enhance profitability with improved margins. So if you look at the import margins, the market has been constantly growing, and that growth in 9 months, we have already imported 23,000. We expect that by the end of the year, we will be reaching 26,000 tons. So the market is constantly growing. We are looking at the opportunities that we see with the new applications coming in. We expect that the market will grow significantly. So that is something that the market has sufficient demand, and there's constant growth that is coming in. Talking about the product application, so we are in mining, textile, and food and beverage. So these are the dominant markets. But we are also selling in poultry, livestock, paper, cosmetics, water treatment, and sugar. So these are smaller markets. That is something that we are constantly trying. As I was telling, that we have had trials in the sugar industry, and we plan to push product into the market. So these markets, if they are developed, there will be a significant increase in the market size, especially. So if you look at the European consumption of product, you will see a significant consumption in the paper industry as compared to textile being a smaller consumer of hydrogen peroxide. If paper application comes in, we expect that the market will double or triple the current size, and there will be significant demand in the market. So that is something significant opportunity in the market. Most of the countries that are dealing with export in papers have to move away from chlorine related products which are carcinogenic, environment friendly and human friendly products such as hydrogen peroxide. So if paper wishes to export from Pakistan to other markets, which we expect that eventually the pressure will come, we will reach a situation in which introduction of hydrogen peroxide into the manufacturing process will make sense. So that is something that eventually the market has to move to. We will see when it does. But we are constantly pushing the market in order to accept the product and move towards hydrogen peroxide application, because we want the market to be chlorine free. Business outlook. This is our outlook for the next year. We are working on diversification of product portfolio. We are working on organic, inorganic growth. We are trying to minimize fixed costs. We are working on retention of critical resources with the competitor coming in. We are working especially on this part.
Hence, export footprint. This is something that you clearly see in the numbers that the company has shown. We are working on efficient working capital management that was disturbed a little bit because during the period we had to step away from minimum working capital because of the supply chain disruption. We had to deploy additional working capital in order to make sure that we do not end up in a situation where we have raw material issues. So, Alhamdulillah, we did not end up in such a situation. We have been able to cross that with very good margins. But the business has also made sure that they do not end up with a huge working capital cost on their books. So we were trying to manage deploy additional working capital without taking loans from the bank. So that was target for the business. And this is something that we have done in a very good manner. Improvement in consumption ratio. This is an ongoing cycle. We are constantly working. We are trying to reduce consumption as compared to others and try to be the least cost producer. Our move toward bulk is something that is very important, not only from our angle, but also from the sustainability angle that we are looking. We will try to retain our position as market leader. We will always be the market leader in the market. So Engro coming with 28,000 after 1.5 or 2 years will still be a smaller player as compared to us. And we will continuously, being a market leader, continuously work on market development. This is a responsibility that we believe that we have. We would want that we continuously work on market development. Okay, moving on to the financials. This is the dividend that we have announced. You will see consistency across the board. And this is something that this business lacked earlier, but now you will see consistent profitability and consistent dividends and consistency across the board. So this is something that this business will see. So this is just a brief history. So if you look at the numbers, the revenue is on the upside. So as compared to last year, which was 2.9 billion in 9 months, we have done 5.1 billion in 9 months this year. If you look at our EBITDA margins, so they were 24 to 42%. So that is a significant 691 million to 2.1 billion rupees. So we, alhamdulillah, have very good margins in the business that we are doing, significantly higher than many of the big players in the market. If you look at gross profit, that has increased from 599 million last year to 2.2 billion this year. So there is a significant increase in gross profitability also. And if you look at net profitability, that has also increased from 289 to 1.3 billion. These all are 9 months numbers. So you can expect full year number to be significantly higher. The margin in terms of net profitability is 25%. So 25% net profitability is something that is rarely seen across the industry. And this is something that is very, very important. So if you look at compounded annual growth rate on 5 years, that's 43% in terms of gross profit and 52% in terms of net profit. So this is something that clearly shows that the business is growing at a pace that no other company can match. Moving on. So if you look at the retained, they also tell the same story. They are growing and we have sufficient reserves available. If you look at earning per share, so earning per share is 7.43 rupees per share for 9 months. You would expect a higher number for full year. Debt to equity ratio is 5%. So you clearly see that the books do not have any debt other than turf. Current ratio, because of the additional working capital that we had deployed, has reduced from 2 in 2021 to 1.8. But this is something that was pre-planned and this was something that was done in order to make sure that we do not end up in a situation with raw material shortages and other issues so that we do not have to shut down the plant like our competitor. If you look at our price, we believe it's significantly undervalued, but we leave it to the market to decide what the price should be. But considering the EPS, we clearly see based on multiple methods that the share price is significantly lower than what it should be. That's about it. If there are any questions, you can ask. Thank you, Rizwan sir. I request all participants, please write your questions in the chat box. I think I have quite a lot of questions already in the chat box. The first question is, why did third quarter profitability decline so much? Whatever the reason was, is it still there? देखिए थर्ड क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो वी बिलीव दैट देयर वाज नो रिडक्शन, देयर वाज अ स्पेशल प्रोविजन दैट वाज बुक्ड इन द थर्ड क्वार्टर, बट दैट्स जस्ट द प्रूडेंट अप्रोच ऑफ द बिजनेस. दैट वाज वन ऑफ, वी डोंट थिंक दैट विल बी रिपीटेड. सो मार्जिन्स हैव नॉट ड्रॉप्ड, बट देयर वाज अ स्पेशल एंट्री इन द बुक्स. इफ यू लुक एट द डिटेल अकाउंट्स यू विल फाइंड इट, बट अदर देन दैट वी डू नॉट सी एनी, एंड दैट वाज जस्ट अ प्रूडेंट अप्रोच टेकन बाय द बिजनेस in order to make sure that we are sufficiently over accrued rather than being under accrued, in order to make sure that we do not create surprises for the market. What are the current prices of HP in the local and export markets? Market is somewhere around $500. Export market, they're also closer to the same. But in terms of export, we have a higher margin because of the tax benefit that we get, and especially also the DTRE status that we get. So export ke andar to internationally, but we do not compare the local market with the international because we want to develop that market. और हम चाहते हैं कि हम उस market को continuously develop करते रहें. That is something that we are continuously working. और उसलिए उसकी इस time तकरीबन prices same level के ऊपर ही है, 500, 550.
के करीब। What are your long-term plans for export? How much contribution do you see exports making of your top line? हमारे देखिए प्लान्स तो हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, बट अगेन वी आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द लोकल मार्केट, क्योंकि हम वी कैन नॉट लीव द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विदाउट द प्रोडक्ट। सो बीइंग द ओनली रिलायबल सप्लायर इन द मार्केट, कुछ रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हम पे पड़ती है, एंड आल्सो बीइंग द मार्केट लीडर दैट वी आर। सो अभी करंट अगर मैं देखूं तो वी आर एक्सपोर्टिंग अराउंड 12% ऑफ आवर प्रोडक्शन। We expect what my preferred number would be somewhere closer to 20%, but it all depends on the local market demand. If the local market demand goes up, we will have to reduce our exports. But if the local market shows a slowdown, reduced demand, then we will obviously move toward exports and other alternatives like food grade or other products that we are trying to sell. Are you easily able to pass on the impact of peak depreciation? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। पीकेआर डिप्रिसिएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। सो हम क्योंकि जिस इंडस्ट्री को सेल कर रहे हैं, दैट्स आल्सो एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, तो जब उनकी अर्निंग डॉलर्स के अंदर है तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर वेरी रिसेप्टिव टू द आइडिया कि उनकी कॉस्ट वाली साइड के ऊपर अगर किसी का डॉलर इम्पैक्ट है तो वो तो मेरे कस्टमर्स पे आई डोंट सी कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट के अंदर तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट से तो आप ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। तो जो लोकल में इम्पैक्ट आएगा वो टेक्सटाइल इज वेरी रिसेप्टिव, दे अंडरस्टैंड द कॉस्ट एलिमेंट्स। हमें उन्हें ये भी पता है कि हम आरएलएनजी ले रहे हैं और आरएलएनजी की कॉस्ट भी हायर साइड के ऊपर है। सो दैट विल नॉट बी अ चैलेंज एंड इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आप जो परसेंटेज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लेते हैं वो कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो मार्जिन इंप्रूवमेंट आती है उसकी वजह से डॉलर डिवैल्यूएशन। सो वी आर अमंग्स्ट द कंपनीज जिनका आप ये कह सकते हैं कि वो डिस्पाइट लोकल सेल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉलर डिवैल्यूएशन से। नॉर्थ और साउथ का सेल्स ब्रेकअप क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स? तकरीबन 50-50 है, 50-50 है, बट वी आर ट्राइंग। अब हमने सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है अभी रिसेंटली। उसमें एक एडवांटेज हमारे कंपेटिटर की एफर्ट्स भी हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा था, तो वो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अभी की सिचुएशन में अगर मैं कहूँ तो आई वुड से कि हम तकरीबन 45%, 50% के 50% हाफ एंड हाफ है, और हम इसको 60-40 के ऊपर इवेंचुअली ले जाएंगे, एंड देन वी विल रिड्यूस amount of sales that we have in south. Eventually Engro will come in, and once they come in, we believe that the market will have sufficient space in order for them to come in, and then there will be no issue with the prices. Northern prices I believe are higher than the southern prices, right? नॉर्दर्न थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे फ्रेट आप जो लैंडेड कॉस्ट आ रही होती है इंपोर्ट की, उसके ऊपर आपको फ्रेट बेयर करना पड़ता है। तो नॉर्दर्न मार्केट्स में नॉर्मली प्राइसेस हायर साइड के ऊपर होती हैं एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि वहां पे इंपोर्ट हो रहा होता है फॉरेन, और वहां पे कोई फ्रेट कॉस्ट भी नहीं आ रही है। हमारे पास दो एडवांटेजेस आते हैं, एक तो वो फ्रेट नहीं भरना पड़ता, दूसरा हमारी लोकेशन नॉर्थ के अंदर है, तो दैट गोज टू आवर एडवांटेज कि हम उधर भी कर सकते हैं, फिर हम सेंट्रल एशिया वगैरह के अंदर सीआईएस कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ये प्राइस डिफरेंशियल कितना है तकरीबन नॉर्थ साउथ के अंदर? नॉर्थ साउथ तकरीबन 10 रुपए का, 8 से 10 रुपए का। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फ्रेट कॉस्ट, बट 8 से 10 रुपए का होता है तकरीबन। आई थिंक योर लोकेशन इज एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज फॉर एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट के लिए इफ यू आर टारगेटिंग सेंट्रल एशियन मार्केट जो कि लैंडलॉक्ड है, देन द लोकेशन बिकम्स एन एडवांटेज। बट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू मिडिल ईस्ट और अदर मार्केट्स, तो फिर उसमें आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू टेक द प्रोडक्ट। बट वी बिलीव कि वहां पे एक्सपोर्ट के अंदर इतने मार्जिन हैं कि वहां पे इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि और एक दूसरा नॉर्थ से साउथ की ट्रांसपोर्टेशन इज सिग्निफिकेंटली चीपर, क्योंकि वहां से ट्रक्स खाली जा रहे होते हैं साउथ की तरफ, और वहां से साउथ से ऊपर आ रहे होते हैं, तो वहां से 3-4 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसएडवांटेज है हमारी लोकेशन की वजह से। From your factory to Uzbekistan, what are the freights like? हम एक्स फैक्ट्री बेचते हैं, वी डू नॉट सेल डिलीवर। सो हम एक्स फैक्ट्री बेचते हैं, सो हमारी सारी सेल्स एक्स फैक्ट्री है, कस्टमर पिक करते हैं, और इसलिए आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू अ नंबर। You told that the market size is around about 100 to 110,000 tons. What is the packing for these estimates, and do you procure oxygen from any other company? या do you produce? नहीं, ऑक्सीजन नहीं है हमारा रॉ मटेरियल पहले तो। दूसरा गैस खरीदते हैं, वो एसएनजीपीएल से आती है, वो मेजर रॉ मटेरियल है हमारा। आपका दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? आपकी डिमांड एस्टिमेट्स आर अराउंड अबाउट 100 to 110,000 टन्स। तकरीबन 100,000 की मार्केट है, क्योंकि देखें आप 30,000 सितारा का है, 30,000 अगर मैं वो लगा लूँ, 42,000 मेरा है, तो 26,000 के करीब जो है, तो तकरीबन आप 93-94,000 के करीब पहुंच जाते हैं। सो मार्केट प्लस माइनस होती है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर आर्ट टेक्सटाइल का बूम आ जाए तो इट विल क्रॉस 100,000 इमीडिएटली, थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा तो इट विल कम।
सो अभी की सिचुएशन में वी एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर ऑपरेट करेगी, बट लेट्स सी। What are the margins and volumes like for the ongoing quarter? We do not expect significant reduction in margins considering कि अभी भी मार्केट के अंदर सितारा is still struggling, but there is a slight slowdown क्योंकि सीजनैलिटी में ये टाइम पीरियड होता है जो कि ऑफ टेक्सटाइल का पीरियड होता है। इसमें ईद भी आ जाती है, ईद की वजह से भी एक थोड़ा सा शटडाउन आता है। नॉर्मली ये थोड़ा सा स्लो क्वार्टर होता है एंड दिस इज द सीजनैलिटी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम डिप्लॉय कर सकें, बट लेट्स सी। कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं, बट नॉर्मली ईयर एंड जो दिसंबर के करीब होता है दैट्स द पीक सीजन, क्योंकि उस टाइम क्रिसमस के डिमांड्स फॉल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास, और जब वो ऑर्डर्स फॉल करते हैं तो वी सी अ सिग्निफिकेंट अपस्विंग इन डिमांड ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देन एक स्लो पीरियड आता है, फिर उसके बाद दोबारा पिकअप, और जब उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स 6 महीने पहले प्लेस होते हैं तो उसके बाद फिर शुरू होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अभी स्लो डाउन है, बट ईद ये क्रॉस करेंगे तो वी विल अगेन सी एन अपस्विंग, वो उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। And you mentioned that you expect Angro Polymers plant to come online maybe a year and a half later, but एंग्रो ने तो but वो कह रहे थे कि they can commission the plant within this year. So आपकी expectation की backing क्या है? अब हम तो देख रहे हैं, देखें प्लांट लगता है तो आपको उसको थोड़ा सा कमीशनिंग पीरियड भी होता है, उसको टेस्टिंग पीरियड भी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई छोटी मशीन है जिसको आप लाएंगे ऑन करेंगे चल पड़ेगी। तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। हम तो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि एंग्रो पहली दफा लगा रहे हैं, हम तो लगा चुके हैं और हम तो मल्टीपल उस पर एक्सपेंशन भी कर चुके हैं, तो हमारी शायद एस्टिमेट शायद थोड़े से बेहतर हो उनसे। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि देखिए फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन पाकिस्तान की कल सुबह तो ठीक नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। उन्होंने जो रीजन अगेन दैट हैज कम फ्रॉम पब्लिक डोमेन, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें वो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से वो एक आध दिन के अंदर नहीं हल होने वाली। अगेन उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर भी होंगे कुछ इश्यूज, कुछ अपनी एग्रो की कमिटमेंट भी होगी कि उसने करवाना है, क्योंकि इम्पोर्ट्स कुछ ना कुछ तो हो ही रही हैं। तो अगर वो उसमें डिले कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर आल्सो गेटिंग कोल्ड फीट में भी। वी डोंट नो। ये तो सवाल एंग्रो की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में पूछा जा सकता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। बट हमारा ये ख्याल है कि अभी जिस सिचुएशन में अभी मशीन्स उनकी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, तो इट विल टेक 1.5 ईयर। फिर शुरू करेंगे तो वो इट विल, पहला साल शायद 5,000 टन प्रोड्यूस करें, अगले साल 10,000 करें, फिर 15 रैंप अप पीरियड होता है। आप नॉर्मली यू टेक सम टाइम, इट कांट बी कि आपने एक दिन सुबह किया और कल सुबह से चला दिया। दैट इज आवर एक्सपीरियंस। तो हमारा ये ख्याल है कि उसमें रैंप अप में भी साल डेढ़ तो लगना है। अभी साल डेढ़ में वो ऑन करेंगे तो साल डेढ़ उसको रैंप अप करेंगे, तो ये तो 3 साल का प्रोजेक्ट है जो कि अभी अभी लंबा चलेगा। And there's a question that I think the prices of H2O2 has been in a downtrend internationally and locally as well in terms of dollars. डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, नॉर्मली एक रेंज में रहती हैं विद द क्राइसिस। जो कि देखें यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिग्निफिकेंट चंक दुनिया में बनाते हैं, सो ये इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी मशहूर है। विद यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो कि दुनिया ने अभी देखा है, वी डोंट थिंक कल सुबह से रशिया या परसों सुबह रशिया की और यूक्रेन की दोबारा से दोस्ती हो जाएगी और यूरोप का फिर गैस चलना शुरू हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, और जब तक वो टाइम है तो द वर्ल्ड विल सी अ शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और उसमें देखना अब ये पड़ेगा कि डिमांड साइड के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कुछ प्रेशर डिमांड वाली साइड पे भी होगा, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज में कुछ स्लो डाउन तो आ रहा है और हाई इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका इम्पैक्ट है। वरना सप्लाई साइड के ऊपर देयर इज सिग्निफिकेंट कट, क्योंकि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर बगैर गैस के बैठे हुए हैं, सर्दियों में उनको प्लांट बंद करने पड़ते हैं, गैस मिलती नहीं है। आरएलएनजी पे वो मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते बिकॉज देयर कॉस्ट्स आर हायर एज कम्पेयर टू आवर रीजन्स। तो इस वजह से देयर इज अ सिग्निफिकेंट कट इन सप्लाईज। तो वी एक्सपेक्ट के प्राइसेस डाउन ट्रेंड में नहीं है, सीजनैलिटी की वजह से थोड़ा सा कम हुई है, बट अगेन कमोडिटी मार्केट्स के अंदर डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट। आप देखते हैं सॉरी मेरी साइड पे इंटरनेट का शायद कोई इशू चल रहा है, उसकी वजह से कोई सिविल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा है। जी आपके क्वेश्चंस थे। अगर आपकी गैस बंद हो जाती है तो डू यू हैव एनी कंटिजेंसी प्लान्स टू कीप योर प्लांट रनिंग? देखिए गैस फर्टिलाइजर की तरह हम उसको फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो जब गैस बंद होती है तो नॉर्मली यू हैव टू टेक अ शटडाउन। गैस का ऑल्टरनेट नहीं होता, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लॉबी करते रहे मुसलसल गवर्नमेंट के साथ। अब देखें ना लास्ट ईयर के अंदर देयर इज नॉट अ सिंगल शटडाउन लिंक टू गैस कर्टेलमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हमारी गैस के अंदर वो कोई ऐसा मसला आ रहा है। वी हैव बीन सिग्निफिकेंटली सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। एक और फायदा भी हमारा ये कि जब हम गैस बंद करते हैं
तो हम जिस इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं सारे। गुल अहमद को अगर मैं बेच रहा हूँ, निशात को बेच रहा हूँ, अगर अरशद कॉर्पोरेशन को बेच रहा हूँ, 10,000 सफायर को बेच रहा हूँ, तो ये सारे वो यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जिसके ऊपर खड़ी है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट खड़ी है। अगर मैं शट डाउन हो जाता हूँ, सितारा तो पहले ही अनरिलायबल है, उसको तो हम काउंट भी नहीं करते इस पूरी क्वेन के अंदर, तो फिर आप जाएंगे किधर? आप टेक्सटाइल भी फिर बंद कर देंगे सारी। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, देयर इज सम प्रेशर, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आपने इनकरेज करना है, आपने उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंद होने देनी, सो दैट गिव्स अस एडवांटेज कि गैस नहीं बंद होती। And what is the status of Bangladesh in terms of imports, both the बांग्लादेश से pricing इम्पोर्ट्स and होगी। quantity? अब मैंने आपको बताया ना प्राइसेस में, जो मैंने आपको $500 का बताया था, दैट वाज वो नॉर्मली मैं बांग्लादेशी की प्राइसेस कोट कर रहा होता हूँ, और ज्यादा क्योंकि बांग्लादेश से ही आ रहा होता है। लेकिन अब कुछ कोरियन माल भी आना शुरू हुआ है, उसकी प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू बांग्लादेशी प्रोडक्ट, बट प्रीडोमिनेटली बांग्लादेश आ रहा है प्रोडक्ट माल। इसलिए तो आप देखें ना, हाईएस्ट एवर इंपोर्ट्स इनटू पाकिस्तान होगी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो माल आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है, वो नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, मैंने ग्राफ दिखाया भी था जिसके अंदर वो इंपोर्ट का ट्रेंड नजर आ रहा है। See imports as a significant threat to you, right? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि गैप अगर मार्केट के अंदर देखें, एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि आज सितारा बिल्कुल गायब हो जाए और इंपोर्ट्स बंद हो जाए और हम अकेले प्लेयर हो, तो आप लाख टन की मार्केट के अंदर आप जो 40-50 हजार बनाएंगे, तो गवर्नमेंट विल पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर कि यार ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर के, इसमें सप्लाई कहाँ से चलेगी सारी। तो वी वुड वांट कि ये बैलेंस रहे, क्योंकि इनकी सप्लाई रिलायबिलिटी जरूरी है हमारी इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल की डिमांड को कल को क्या कहेंगे, बंद कर दें आप सारा। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बीइंग मार्केट लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी डोंट सी एक्सपोर्ट एज अ थ्रेट, वी सी एक्सपोर्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। What is the status of food grade segment and what is the capacity and utilization like? हम तकरीबन अभी 1,000 टन पाकिस्तान की जो डिमांड है वो फुलफिल कर रहे हैं। हम पहले लोकली बेच रहे थे। ये सारे बड़े प्लेयर्स जो आप नेस्ले कह लें, एंग्रो कह लें, ये सब पाकोला कह लें, सारे बड़े प्लेयर्स हमारे कस्टमर्स हैं। दे ऑल आर बाइंग फ्रॉम अस। और ट्राइड एंड टेस्टेड फूड के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है, यू नीड अल्ट्रा रिफाइंड प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी मच मोर सुपीरियर होती है टू व्हाट यू आर सेलिंग इन टेक्सटाइल। इसीलिए पाकिस्तान में वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर जो कि बना सकता है। अब हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया है टू 5,000 टन, एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर एडिशनल फूड ग्रेड प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो वो उस पे मार्जिन भी हमारे इंप्रूव हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लोअर होती है डिस्पाइट कि उसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है, तो उससे मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, बट ऑल्सो उसकी प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो उधर वो इतना इतना इंटेंसली कम्पीटेड। अब जिस तरह बांग्लादेश में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं बनाता फूड, तो वो सारे टेक्सटाइल ग्रेड बनाते हैं, तो दैट गोज टू आवर एडवांटेज कि हमारे रीजन में जब लिमिटेड प्रोड्यूसर होंगे, एक दो प्रोड्यूसर्स होंगे, देन आप कोरियंस को जब थाई को करेंगे तो प्राइसेस ड्रॉप नहीं करते। फूड ग्रेड आई थिंक आपका कमीशन के हुए अब 6-8 महीने हो गए हैं, तो हम हैव यू? मल्टीपल प्लांट्स के ऊपर टेस्टिंग करवा रहे हैं उसको, क्योंकि आपको फूड ग्रेड के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसकी फूड ग्रेड की टेस्टिंग सिग्निफिकेंटली टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप उसको बेचते हैं कैंस को, जब इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो कई दफा तो 3-4 महीने तो सिर्फ ट्रांजिट टाइम होता है जिसमें माल ने वहां पहुंचना होता है। फिर उसका जब बैच की बारी आएगी तो नॉर्मली 6-8 महीने तो टेस्टिंग में लग जाते हैं, जिसके अंदर आप टेस्ट करवा रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट आप हमारा टेस्ट करें। बट वी हैव सिग्निफिकेंटली रिलायबली से कि हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में हम अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, हम 90 to 95% मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं और नेस्ले जैसे प्लेयर के साथ काम कर रहे हैं, एंग्रो जैसे प्लेयर के साथ काम कर रहे हैं। तो वी डोंट फोरसी कि वहां पे कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग में चैलेंज आएंगे, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर जो कि वहां पे फूड प्रोडक्ट बना रहा है, कि वो पहले कंफर्टेबल होगा उस प्रोडक्ट के साथ, फिर उसको अपनी सप्लाई चेन के अंदर ऐड करेगा, बिकॉज दे वुड नॉट वांट कि यार वो इवेंचुअली ऐड कर लें और देन दे रियलाइज कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, क्योंकि फूड के क्वालिटी इश्यूज इज लिंक टू सिग्निफिकेंट रेपुटेशन रिस्क। कपड़े के ऊपर आपने केमिकल का यूज किया, शायद उसका रेपुटेशन रिस्क उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के खाने में कोई चीज चलेगी तो दैट इज सिग्निफिकेंट रेपुटेशन रिस्क, तो वहां पे थोड़ी सी टेस्टिंग ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं हो रहा, वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। डिफरेंशियल बिटवीन नॉर्मल आपका टेक्सटाइल ग्रेड एंड फूड ग्रेड एचपीज 30-40% के करीब है और सिग्निफिकेंट है, उसमें प्राइसेस भी बेहतर होती हैं, मार्जिन में भी बेहतरी आती है, तो देयर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। और सेंट्रल एशिया के अलावा व्हाट मार्केट्स आर यू लुकिंग एट फॉर एक्सपोर्ट्स? हम मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं, रैकेट वगैरह को मिडिल ईस्ट के अंदर हमने टैप किया हुआ है, बट अदर देन दैट हम श्रीलंका में भी कर रहे थे। पहले श्रीलंका में अब क्राइसिस चल रहा है तो उसकी वजह से हम रुके हुए हैं। अब वी आर लुकिंग एट द मार्केट, बट श्रीलंकन टेक्सटाइल में भी सप्लाईज दे रहे थे, तो हम काफी सारी मार्केट्स में काम कर रहे हैं। हम फिर अफ्रीका के अंदर वी आर ट्राइंग कि हम भी गेट सम हेडवे
अभी तक we haven't been able to supply large volumes, but we would try कि हम करें. Middle East is one market that we see as a significant opportunity still. And what is your DTR in non-DTR sales pitch? तकरीबन 50-50 के करीब है, आधी आधी है. And आपका सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर कौन सा है एंड कितना बड़ा है वो आपकी टॉप लाइन का? अब सिंगल लार्जेस्ट तो मैं कहूंगा कि शायद 8-10% है, इतना बड़ा नहीं होगा, बट जो माइनिंग के अंदर यूज होता है वहाँ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जाते हैं, वहाँ 10-20% भी हैं. बट वो माइनिंग की बहुत बड़ी एंटिटीज हैं और उसमें कुछ कुछ गवर्नमेंट की एंटिटीज भी आती हैं, तो इसलिए वो हमेशा गवर्नमेंट इज नॉर्मली द बिगेस्ट बायर, तो इसलिए वो, लेकिन वहां पे कोई ऐसा ग्रेट इशू नहीं है. हम जो सारी टेक्सटाइल में सेल करते हैं वो सारी एडवांस है, बाकी एक्सपोर्ट में जितनी सेल करते हैं सारी एडवांस है, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है उस कस्टमर के साथ कि हमारा वो इम्पैक्ट आता है. आपका क्योंकि योर बिजनेस इज रीचिंग समवॉट मैच्योरिटी, ठीक है, आप 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं और मार्केट में और जगह नहीं है, एटलीस्ट आपकी कैपेसिटी में और जगह नहीं टू ग्रो फॉर द टाइम बीइंग. सो व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, एनी अदर वेंचर्स? अच्छा, बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, पहले तो वी आर स्टिल वर्किंग, डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क इन व्हिच वी राइटली पॉइंटेड कि इसमें अब शायद वो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन मल्टीपल एवेन्यूज, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी देख रहे हैं, अदर देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी देख रहे हैं, बट वी विल, वंस वी हैव अ कंक्रीट प्लान, वी विल कम टू द मार्केट एंड विल लेट यू नो कि हमारा क्या प्लान है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. ऐसा नहीं है कि हमारा प्लान नहीं है, और इसी वजह से आप हमारी बुक्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ कैश देखते हैं, और वो पड़ा भी इसीलिए हुआ है कि वी आर प्लानिंग समथिंग, कि हम फर्दर एक्सपेंशन या कोई प्लान करें ताकि वी मूव इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे, बट अभी ऐसा कोई पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई, आई विल लीव इट देयर. एंड व्हाई आर यू प्रोड्यूसिंग फार्मा ग्रेड? आई थिंक इट कैरीज हायर मार्जिन देन द टेक्सटाइल. मार्जिन उसके ज्यादा है, लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है. फार्मा के अंदर कंजम्पशन नहीं बहुत थोड़ी, शायद 10 टन हो, 20 टन हो, तो वो आपको वो रेलिवेंट नहीं रहता, आपको फिर डिप्लॉयमेंट मुश्किल हो जाती है. तो आप 42,000 टन के प्लांट के लिए 10-20 टन तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड द मार्केट इज हाई मार्जिन मार्केट एज कम्पेयर टू अदर्स, तो हम उसमें को केटर कर रहे हैं, बट अदर देन दैट उससे ज्यादा बड़े मार्जिन जो है वो दूसरों से आते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर तो उनकी वॉल्यूम ज्यादा बड़े हैं. जैसे Akroma, for example, mentioned that they are planning to go for green hydrogen, and hydrogen being your primary raw material as well. So, do you have any plans in that regard? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे दुनिया में अभी मैं जिसको कहूंगा वो रिसर्च वाले पे काम हो रहा है काफी सारी जगह पे. अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ किसी ने बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर लिया. रिसर्च पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो पॉसिबल है. उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी पाकिस्तान में उस स्टेज पे शायद हम नहीं पहुंचे जहाँ पे वी विल गो देयर, बट इवेंचुअली आई एम टेलिंग यू कि डेस्कॉन वुड बी द लीडर इन व्हाटएवर वी आर डूइंग. अगर उसमें कहीं पे आता है तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट. वो हम वी आर लुकिंग एट दोज अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंट चेंज है, मतलब वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस की तरह नहीं होता, वो इस प्लांट के साथ में अटैच नहीं कर सकते. इसलिए कह रहे हैं कि course Akroma is also planning that, and Oman recently this week only announced a $20 billion odd project for green hydrogen. तो हमारे रीजन पे सामने ही है. एक टाइम में हमारे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनती थी हाइड्रोजन, बट फिर वो बिजली इतनी महंगी होगी कि फिर पीपल स्टेप्ड अवे. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट अभी वो मैच्योर नहीं है. वंस दैट गेट मैच्योर और कोई थोड़े से हमें रेप्लिकेट होते मॉडल्स नजर आते हैं इंटरनेशनली, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट. And what is your gas and power consumptions like per ton basis? कंजम्पशन फैक्टर नहीं मैं डिस्कस कर सकता, वो डिस्क्लोज नहीं है, हमारे वो कंपेटिटर्स की भी नहीं है, वो हम भी डिस्क्लोज नहीं करते. और ये जो फूड ग्रेड कैपेसिटी है, दिस is included in the 42,000 tons, right? So you will produce. जी बिल्कुल. इसमें से ही बेसिकली जो मैं फूड ग्रेड में लेके जाऊंगा वो टेक्सटाइल में से मुझे कट करना पड़ेगा. तो बेसिकली इसका मतलब है कि मेरे लिए इंपोर्ट्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आज अगर इंपोर्ट्स बंद हो जाए तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा जिसके अंदर मैंने फूड ग्रेड के अंदर प्रोडक्ट बेचने, क्योंकि मुझे टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्ट पुश करना पड़ेगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी डेलिकेट बैलेंस है जो कि हम लेके चल रहे हैं, उसमें अपना प्लान भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं. इंपोर्ट्स मैंने इसीलिए कहा कि इंपोर्ट्स रादर देन थ्रेट एक अपॉर्चुनिटी है हमारी. क्वेश्चन के उज्बेकिस्तान में अपेरेंटली एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट कमीशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर, एंड दैट मार्केट बीइंग योर मेजर एक्सपोर्ट मार्केट, हाउ डू यू मैनेज टू डील विद इट? अच्छा, सेंट्रल एशियन मार्केट जो है ना, वो दैट इज नॉट लिमिटेड टू उज्बेकिस्तान. इन सारों के बॉर्डर्स बहुत ज्यादा पोरस हैं. पोरस इन द सेंस कि लीगली उनके आपस में एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो इसलिए ऐसा मसला नहीं है कि आप एक मुल्क में बनाए और दूसरे में जाके बेचना शुरू करें.
तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अगर CIS की डिमांड आप टोटल करें तो वो ज्यादा रेलेवेंट फिगर है, तो वो इसलिए सिर्फ उज्बेकिस्तान का अंदर प्लांट लगना इज इररिलेवेंट, उनकी डिमांड सिग्निफिकेंटली हायर है। वी बिलीव कि उनके जो नंबर्स हमारे पास हैं वो दे आर मच मच बिगर देन द प्लांट जो एक वो लग रहे हैं। उज्बेकिस्तान शायद सिर्फ अपने लिए लगा रहे हैं, बट उनकी सराउंडिंग कजाकिस्तान के अंदर इट्स अ ह्यूज माइनिंग मार्केट, आप उसके अंदर बेच सकते हैं। फार्मा टर्की बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेके आता है जो कि बिकता है, फिर इंडिया का कुछ माल भी जाता है जो बिकता है वहां पे, तो देयर आर सिग्निफिकेंट एरियाज जहाँ से प्रोडक्ट जा रहे हैं। व्हाट अबाउट द शुगर? आपने लास्ट ईयर आई थिंक बताया था कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर इट, तो इस क्रशिंग सीजन में वर यू एबल टू मेक एनी हेडविंड्स, आपका ब्रेक थ्रूज? नहीं, अभी नहीं, बट वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन नॉर्मली आपको टेस्टिंग विंडो मिलती है, वो सीजन के एंड पे जाके हम थोड़ा सा करेंगे, बट अभी नहीं हम हेडविंड जो उसमें बना सके, बिकॉज देखिए एक इंडस्ट्री को एजुकेट करना और चेंज करना इज अ सिग्निफिकेंट टास्क, वो मतलब इतना छोटा नहीं है कि वो शुगर इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, और उनके प्रोसेसेस और सिस्टम्स लॉक हुए हुए बड़े अरसे से। आपको बहुत ज्यादा एजुकेट एंड तक टेक्नीशियन तक को एजुकेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेल हिम कि यार ये प्रोडक्ट सुपीरियर है एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर लुकिंग एट अदर्स, तो वो फिर एजुकेट, और फिर देखिए ओनर तक तो शायद वो कॉस्ट सेविंग सिर्फ उसको समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ पे कॉस्ट सेविंग नजर आती है, बट जब नीचे वाले लेवल पे जाते हैं तो वहां पे वो हैबिट को भी आपको ठीक करना पड़ता है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, इट कैन नॉट बी ओवरनाइट, बट वी विल ट्राई कि इस दफा वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए। One last question, since we are already above our time target, what is the demand and supply numbers for the CIS region? CIS का देखिए कंक्रीट नंबर्स मेरे पास इस टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पोरस रीजन है, उसके अंदर फ्लो करता है माल मल्टीपल मार्केट्स के अंदर, बट हमारा ख्याल है कि वो हमारी मार्केट से तो सिग्निफिकेंटली हायर वॉल्यूम्स है। ठीक है, थैंक यू रिजवान साहब फॉर योर टाइम, थैंक यू, एंड टुडे मार्क्स थैंक द यू फॉर एंड द ऑफ सेशन, जी जी please give a thank you for the quick remark. session, and much appreciated the effort that you people have put in marketing the product, और पार्टिसिपेशन से क्लियर नजर आ रहा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑन द फोरम जो कि आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से है अवेलेबल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस। थैंक यू। Today marks the end of the chemical week being hosted by Alfalah CLSA. To review Lucky Core Industries, Angro-Polymer, Nimir Chemicals, Etihad, Archroma and Descon were part of this conference. I thank all participants and the management for attending, and I hope that we were able to bridge the information gap and that this endeavor was helpful for everyone. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.